हेलो एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 दैट इज क्लोथ्स हाउ थिंग्स आर मेड एंड दिस इज पार्ट 1। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सो वेयर क्लोथ्स कम फ्रॉम, हाउ थ्रेड इज मेड, हाउ क्लोथ इज वोवन, अमेजिंग इंडियन हैंडलूम्स एंड व्हाई वी शुड रिसाइकिल क्लोथ्स। ओके, नाउ अब देखो कि बहुत हजारों साल पहले व्हेन द ह्यूमन डोंट नो हाउ टू वीव, उन्हें क्लोथ बनाना नहीं आता था, उन्हें स्टिचिंग नहीं आती थी, सो दे यूज टू वेयर, they wrap their body with the skin of the animals, or they wrap their body with the leaves, right? So but that time there was one creature who know how to weave. वो एक creature था जिसे बुनाई करना आता था। हाँ, सो कैन यू guess which of these animal who know how to weave? It's a monkey, weaver bird, elephant, or a tiger. So just I'll give you some time. So in this chapter we will find who is that animal. Okay, now we all love to wear different types of a clothes, right? So कभी आपने सोचा है कि ये जो क्लोथ जो आप पहनते हो, how it reaches to you, how many people have worked to make it before it reach to your cupboard? ना, आपके कबर्ड तक पहुंचने से पहले कितने लोगों ने इस कपड़े को बनाने के लिए मेहनत किया है? So let's find out how your clothes are made. Nature's amazing weavers. जैसा हमने देखा ना, before human know that how to weave a cloth, but that time there was one creature who know how to weave clothes. So जब ह्यूमन को पता नहीं था कि कैसे कपड़े की सिलाई करते, बट उस समय एक ऐसा क्रिएचर था जिसे पता था कि कैसे बुनाई करते हैं, एंड दैट वाज मेल बाय अ वीवर बर्ड। वो एक बर्ड है एंड दैट इज मेल बाय अ वीवर बर्ड। ठीक है, सो दिस वीवर बर्ड नो हाउ टू वीव। ओके, सो नेचर हैज मेनी टाइनी आर्टिस्ट। नेचर में आप देखोगे कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। सो लाइक स्पाइडर इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट ना, हाउ दे ब्यूटिफुली क्रिएट देयर वेब, right? So some birds and insects can weave, stitch and build beautiful homes. ना बहुत सारे insects हैं, birds हैं, ना they can stitch, they can weave, ना बुन सकते हैं, and they can make their beautiful homes. So like that there is a bird which is by a weaver bird. ठीक है? So this bird can make nest by weaving the twigs, by taking the grasses ना, grass का use करके, twigs का use करके, आप देखो कितना सुंदर से they make some hanging, this kind of a hanging nest, वो इस टाइप का घोंसला बनाते हैं। ठीक है, so they weaves grass strands over and under. So आप देखो कैसे हम सिलाई करते या वीविंग करते ना, so how we we put the threads up and down. Similar way, this bird also put the grass strands over and under. ठीक है, जैसे हम बुनाई करते ना, similar way में this bird also makes its nest by putting the grass strands over and under. Makes very strong nest. अब देखो these are hanging. अब जो normal nest आप देखते हो वो कैसा होता है? They are put on branches, उन्हें support चाहिए होता है base में, but this nest is hanging. अब देखो this is a hanging nest. So young birds make rough nest. जो young birds होते हैं ना, beaver bird, their nest is not very comfortable, they are very rough nest, but the older birds ना काफी experience हो चुका होता है and they make beautiful nest. So humans learned many ideas by observing nature. So जो human है ना, they have learned a lot of ideas from the nature. Okay? So just like we braid our hair ना, आप देखो कि लंबे बाल हो जाते हैं तो हम चोटी बनाते हैं. Similarly, the bird weaves grass to build its home.
तो जैसे हम चोटी बनाते हैं ना, वैसे ही ये बर्ड्स क्या करती हैं, दे वीव द ग्रासेस ट्विग्स टू बिल्ड इट्स होम। ओके, नाउ व्हाट इज वीविंग। ना हम वीविंग के बारे में बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज दिस वीविंग। सो वीविंग मीन्स ज्वाइनिंग थ्रेड्स टुगेदर, थ्रेड्स को ज्वाइन करना। आप देखो क्लोथ्स कैसे बनता है, क्लोथ्स आर मेड बाय वीविंग द थ्रेड्स, थ्रेड्स को हम बुनते हैं एंड दैट्स हाउ द क्लोथ्स आर मेड। सो आप जो क्लोथ्स, अब एक रफ क्लोथ ले लो, सो यू विल सी देयर लॉट ऑफ थ्रेड्स कमिंग, इट मीन्स दैट क्लोथ किससे बना है, क्लोथ्स थ्रेड से बना है। सो द थ्रेड्स आर अरेंज्ड इन अ क्रिस क्रॉस पैटर्न, ना थ्रेड्स को क्रिस क्रॉस पैटर्न में अरेंज किया जाता है एंड दैट्स हाउ द क्लोथ्स आर मेड। सो हियर वीविंग मीन्स ज्वाइनिंग द थ्रेड्स टुगेदर, वीविंग में क्या करते हैं, हम थ्रेड्स को ज्वाइन करते हैं टू मेक अ क्लोथ। ओके, टू सेट्स ऑफ अ थ्रेड आर यूज्ड। सो क्लोथ बनाने के लिए हमें दो सेट चाहिए, धागे का दो सेट्स चाहिए। वन इज अरेंज्ड वर्टिकल एंड द अदर इज हॉरिजेंटल। वर्टिकल मीन्स ऊपर से नीचे एंड हॉरिजेंटल मीन्स राइट टू लेफ्ट। ठीक है, सो टू थ्रेड्स आर देयर, one is vertical thread and the other is horizontal thread, and they cross over and under each other to make a fabric. सो आप एक पुराना क्लोथ या फिर बेडशीट का टुकड़ा, सो कट इट एंड जस्ट ऑब्जर्व इट केयरफुली, यू विल ऑब्जर्व how the threads are arranged. So they are arranged in a vertical and a horizontal pattern. ठीक है, so this weaving technique is used to make cloth, बनाने के काम में आता है, to make mats, basket, rugs. Okay, so a lot of natural materials are used for weaving. So हम daily use में भी आप देख सकते हो कि a lot of items which we use are made from the natural material. So people have been weaving for thousands of years. So ये जो weaving technique है, it has been for thousands of years the people are using this technique. So natural materials are used to make useful items. बहुत सारे natural materials use किए जाते हैं and through that we make some useful items. So some common material which are used like coconut fiber. आप देखो जो कोकोनट अंदर में होता है बट उसके बाहर आप देखो बहुत मोटा सा कवर होता है ना, दैट इज कोकोनट फाइबर एंड इट इज नोन एज अ क्वायर। इसे सुखाकर इसकी हम रस्सी बनाते हैं ना, रोप, मैट्स, बास्केट, बहुत कुछ बनाते हैं। पाम रीड्स, सो जो पाम के जो पत्ते होते हैं, दैट इज ऑल्सो ड्राइड एंड थ्रू दैट वी मेक बास्केट, वी मेक हैंड फैंस, मैट, बहुत कुछ बनाते हैं। देन थ्रू बैम्बू, बैम्बू से भी हम बास्केट्स बनाते हैं। ओके, सो लॉट ऑफ items are made from the bamboo also, from the grasses, सो ग्रास को भी हम वीव करके मैट्स, बास्केट ना, और कैरी बैग्स। Then jute, using jute also we make carpet, bags, rope, बहुत कुछ बनाते हैं। Then cotton, cotton is used to make clothes. Silk, silk is again used to make clothes. So these are the common, very natural material ना, these are naturally available in our surrounding, ये हमारे surrounding में naturally available होते हैं and using these natural materials we weave these, okay, and make useful items. So these materials are woven into baskets ना, इन natural material का use करके हम baskets बनाते हैं, mats, sheets and many other useful household items. So a bamboo basket or a coconut fiber doormat used at home is made by weaving natural material. So आप अपने घर में भी देखो, like if you're having a bamboo basket, so again the bamboo baskets are made from the bamboo which is a natural material. और अब देखो कि ये basket कैसे बनते हैं, so it is weaved ना, so you can see a crisscross pattern there. Then doormats ना, डोरमैट्स आप देखोगे कि ये कॉटन फाइबर दैट इज स्क्वायर का यूज करके बनाते हैं। सो ट्राई टू फाइंड सम आइटम्स इन योर होम विच इज मेड फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल। ओके,
सो यू हैव टू बिकम अ लिटिल वीवर। आपको यहाँ पे कपड़े बनाने हैं, ठीक है। So for this you need some paper strips like this. You need some paper strips. So you can take two color of paper strips. Okay. So दो color के paper strips आप ले लो. Now see, some paper strips are arranged like this. It is the vertically the paper strips are arranged. इन्हें हम vertically arrange कर दिए हैं. Okay. Now we will take the other color paper strips. आप other color के paper strips ले लो. And now you have to put it one up and one down. One up, one down. So like this, over, under, over, under. And when you continue doing like this, आप देखो जब सारे paper strips को आप एक over रखो and then the other side you put it under, over, under, over, under. So when you continue doing like this, you will get a beautiful mat. Okay, so you will get a beautiful paper mat. So this is how the weaving is done. So similar way, if you replace this paper by a thread, cotton thread, you will get cloth. So जब हम इस paper को cotton thread से replace कर देंगे, then the cloth will be formed. Okay, so you can replace this paper with ribbon. आप ribbon का use कर सकते हो, or with strings, or rope, or coconut leaves. Then you can make different types of items. आप basket बना सकते हो, and you see, to make the basket also similar kind of a pattern is used. So how you made a mat like this, you can make a basket or you can make a bag. Okay, so you can try making different types of items. So अब देखो जब ये paper है, it is not very strong, but when it is weaved, it is arranged in this pattern, it becomes very strong. So simple strips become strong when woven together. अब देखो एक धागा काफी कमजोर होता है, you can easily break it. But when it is made into cloth, it become very strong. काफी कपड़ा काफी strong हो जाता है, right? So when it is woven together, it becomes strong. Now look closely at your clothes. So have you ever observed very closely at your t-shirt or your cloth, whatever you are wearing? Have you ever looked very closely? कभी आपने देखा है बहुत close से? So if you have not seen, so uh, take a magnifying glass, और अगर आपके पास magnifying glass नहीं है, then you can take the phone camera, zoom it. ठीक है, phone camera आप use कर सकते हो, zoom it, and when you zoom it, you can see this kind of a pattern. So आप देखो, you can see this tiny crisscross threads. अब threads कैसे arrange हैं? So these threads are woven together. अब देखो, one is over under, how we have made the mat using the paper. पेपर से जैसे हमने मैट बनाया था ना, सिमिलर पैटर्न में आप देखो कि ये थ्रेड्स भी अरेंज्ड है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ वीविंग. ठीक है, सो दीज थ्रेड्स आर अरेंज्ड इन अ क्रिस क्रॉस पैटर्न. Okay, so without weaving, cloth cannot be made. Okay, so if it is a thread, it is of no use. But if it is woven, it becomes a cloth and it becomes strong. Okay, so you can observe your shirt, you can observe the towel or a handkerchief or a bed sheet. You will find everything has the same kind of a pattern. Okay, all have the woven threads. India's handloom tradition. अब देखो, India has been weaving cloth for over 4,000 years. So India में clothes बनाने का जो tradition है काफी पुराना है. It is around 4,000 years old. Okay, so hand weaving is done on an instrument called loom. So आप देखो कि अब threads को arrange हाथ से तो नहीं कर सकते. So to arrange these threads to weave the cloth को बनाने के लिए we use a instrument which is known as a loom. इसे क्या कहते हैं? It is known as a loom, and here it is done by using hand. Okay, यहाँ हाथों से हम बुनाई करते हैं
using this instrument called loom. So the cloth made by this loom is known as a handloom fabric. So जो भी cloth इस loom से बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? Handloom fabric. And why this handloom is so special? Even in different parts of India, still this handloom is very uh, widely used. अभी भी आप देखोगे कि बहुत सारी जगहों पे this handloom is widely used. So why handloom is so special? Because it is handmade, okay? Then you can create beautiful design. Using this handloom, you can create beautiful designs on your cloth. It supports artisans. So बहुत सारे लोग they work on this handloom and earn their money. Okay, they earn money by making the clothes. It protects Indian culture और ये हमारे culture का एक part है and it protects this Indian culture. Okay, and it doesn't require any electricity, so no pollution. Hmm. So do you know that there are many handloom traditions in India? So अब handloom क्या होता है? So handloom is a machine that is operated by hand. ये hand से operate किया जाता है. It doesn't require electricity. So the skilled weavers they use it to make beautiful cloth. Okay, so every region has its own way of weaving, and this is a technique. Every state, like in India, every state has a different kind of a language, different food. Similarly, every region has its own way of weaving. Okay, own way of weaving technique. Okay, so they make their own special design pattern. Okay, so India has its own special handloom tradition. For example, the people in Tamil Nadu are famous for beautiful Kanjivaram silk sari. Okay, the people in Kashmir make soft and warm pashmina shawls, and the people in Odisha and Gujarat they make colorful ikat fabrics. Okay, and these special clothes are made on a handloom. Okay, so from cotton to thread. So आप देखो कि how we can make our clothes. What is the basic material you need to make the cloth? So to make the cloth you need thread, right? To make a cloth you need thread. And how the thread is made? Thread कैसे बनाते हैं? So thread is made by twisting cotton fiber. अब देखो cotton तो यहाँ we get from the cotton plant ना. So like this you can get the cotton from the cotton plant. You can see in the picture. Okay, so now this is very loose. ये जो cotton मिलता है ना, it is very loose. It's not very strong. Then what it is done, the fibers, okay, सो आप देखो जब ये कॉटन आप जब निकालते हो सो यू कैन सी वेरी फाइन फाइन स्ट्रैंड्स आर देयर. बहुत छोटे पतले पतले धागे, बहुत छोटे छोटे पतले धागे होते, उन्हें हम फाइबर्स बोलते हैं. दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर लूज. सो दीज कॉटन्स आर ट्विस्टेड. ठीक है, दे आर ट्विस्टेड टुगेदर. So the cotton fibers are twisted to make thread. उसे thread बनाया जाता है and the thread are very strong. ठीक है, so this process is known as spinning. So spinning क्या होता है? So spinning is a process in which the cotton fibers are twisted to make thread. Okay, and how it is done? It is done by using this instrument called चरखा. इस चरखा की मदद से हम इस कॉटन लूज कॉटन फाइबर्स को हम थ्रेड में बदल सकते हैं. ओके, सो दिस इज नोन एज अ spinning. This process is known as a spinning and it is done on the charkha. But nowadays the machines do the spinning work and it is quite faster. So the machine spins thousands of thread very quickly. So let's see in detail. So from cotton to thread. So before we make cloth, we need thread. जब हम cloth बनाना चाहते हैं तो सबसे basic material क्या चाहिए हमें? We need thread. So आप देखो जब when you get the cotton from the cotton plant, it is loose cotton, right? So it is very soft cotton
एंड व्हेन यू जस्ट आप जब इस कॉटन को आप देखोगे, you can see very fine strands are there like this, and this is called fiber. इसे क्या कहते हैं? Fiber. And these fibers are very loose. Okay, you cannot directly use this fiber to make a cloth. Okay, we cannot weave it into cloth. So what we have to do? So we have to make a thread out of this cotton. इस cotton से हमें पहले thread बनाना होगा, which is very strong. Okay, so from these loose fibers we twist these loose fibers. ये जो loose fibers है ना, काफी soft होते हैं, इन्हें हम twist करते हैं. ठीक है? By twisting these cotton fibers they become thread. And how it is done? It is done by using this चरखा. इस चरखे की मदद से हम thread बना सकते हैं. And this process is known as a spinning. So spinning क्या है? The process in which the fibers are twisted to make threads is known as a spinning. Okay? So using this charkha you can do it, and it is hand operated. ये चरखा hand operated होता है. It doesn't need any electricity. But to make the threads it was very time consuming. But nowadays we have machine which can do the same work in a very short time. Okay, so remember from the fiber you get thread, which we also called it as a yarn. So ये सारे क्या हैं? अब देखो ये जो threads बनाए ना, so these are very long threads which are used to make clothes. और इसे हम क्या कहते हैं? It is called yarn. And now this yarn will be weaved together to make cloth. So remember, from fiber we get thread, and from the thread we get cloth. Okay. So here are some definitions. So what is spinning? Spinning is a process of twisting cotton fibers together to make a thread, which we call it as a yarn. Okay. So the twisted thread is very strong and it is ready for weaving. What is चरखा? चरखा क्या है? तो चरखा इज अ ट्रेडिशनल टूल यूज टू स्पिन कॉटन इनटू थ्रेड. इस चरखे की हेल्प से पहले हम थ्रेड बनाते थे. ठीक है? व्हाट इज फाइबर? सो फाइबर इज अ थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड फाउंड इन द कॉटन. आप कॉटन को देखोगे तो देखोगे बहुत छोटे 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 हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर है, विच इज नोन एज अ फाइबर. एंड these fibers are twisted together to make one strong thread, that is called yarn. ठीक है? You can also try take some cotton. So cotton को आप देखोगे कि आप stretch करोगे, it can easily break. But when you take some cotton and twist it with between your fingers, ना अपने fingers के बीच रख के आप twist करो, it will get a shape of a thread and it will be strong. Okay? So this is the flow chart. So firstly we get cotton fiber, and with the help of this charkha we can make thread from this fiber, cotton fiber, and now we get the yarn, and from the yarn using this hand loom we can make cloth, and from the cloth you can make different uh, items like a shirt, sari, dress, towel, whatever you want you can make. Okay. So, do you know that Gandhi ji showed us how important it is for us to become self-sufficient? So, उस जमाने में जब when India has not got its independence, that time we were buying the British-made clothes. हम उस समय British द्वारा बनाए गए क्लोथ्स को खरीद रहे थे. But गांधी जी showed that we should be self-sufficient. हमें अपना अपने कपड़े खुद बनाने हैं. So he started to spin the thread from the cotton using the charkha, and this charkha become the symbol of freedom struggle and a path to become आत्मनिर्भर. So हमें उन that time जब before independence, so गांधी जी ने क्या बताया कि we should not depend on the Britishers for our clothes, we should try to make our own clothes. ठीक है? So he started to make the thread from the charkha. ठीक है? And the cloth made in this way it is known as a khadi. इस कपड़े को हम खादी बोलते थे. So that's it for today.
So don't forget to watch the second part of this video. So hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर यूजफुल लगा हो, so please like the video, subscribe to the channel. See you in the next class. Till then, bye, take care.